नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रात, शिवा, रंगीला, भूत, सत्या जैसी एक से बढ़कर एक उम्दा फिल्में बनाने वाले जाने माने फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने मार्शल आर्ट्स पर आधारित अपनी अगली फिल्म लड़की ड्रैगन गर्ल की रिलीज का ऐलान आज मुंबई में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मुंबई के JW मैरियट में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च के साथ ही निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने इसे 15 जुलाई को रिलीज करने की घोषणा की है। फिल्म में मुख्य भूमिका में पूजा भालेकर नजर आएंगी, जो असल जिंदगी में खुद मार्शल आर्ट्स में माहिर है। राम गोपाल वर्मा ने बताया कि उनकी फिल्म भव्य स्तर पर न सिर्फ भारत में रिलीज की जाएगी, बल्कि फिल्म के चीनी वर्जन को चीन के तकरीबन 40,000 सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म राम गोपाल वर्मा के गृह राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु भाषा में तो रिलीज की ही जाएगी, साथ ही इसे तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाएगा। लड़की ड्रैगन गर्ल की रिलीज को लेकर बेहद उत्साहित राम गोपाल वर्मा ने कहा कि ये मेरी अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक है। मैं बचपन से ब्रूस ली का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। मैं खुद भी मार्शल आर्ट्स सीखा करता था, मगर 15 जुलाई मेरे लिए वो तारीख है जिस दिन मेरा सपना साकार होने जा रहा है। मैंने फिल्म का एक हिस्सा चीन में भी शूट किया है। फिल्म में कुछ चीनी कलाकार भी नजर आएंगे। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसकी रिलीज का मुझे बेताबी से इंतजार है। एक दिग्गज फिल्म मेकर के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म में एक हीरोइन के तौर पर सचमुच की मार्शल आर्टिस्ट में पारंगत लड़की को लिया, न कि एक ऐसी हीरोइन को लिया है जिसे बाद में मार्शल आर्ट्स के गुर सिखाए गए हों। वे कहते हैं, पूजा एक बेहद प्रतिभाशाली शख्सियत के तौर पर मेरे सामने आई। वे ग्लैमरस होने के साथ साथ मार्शल आर्ट्स में भी पारंगत हैं, जो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए फिल्म में उन्हें कास्ट करना मेरे लिए बहुत आसान रहा। लड़की द ड्रैगन गर्ल राम गोपाल वर्मा की सुपरहिट फिल्म रंगीला और ब्रूस ली की फिल्म एंटर द ड्रैगन का अनूठा संगम है, जिसमें काम करके पूजा बेहद खुश नजर आई। फिल्म के बारे में पूजा कहती है कि ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे अपने प्रेमियों और ब्रूली के पति अपने प्यार में से किसी एक को चुनना होता है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि राम गोपाल वर्मा ने ब्रूली पर आधारित एक ऐसी असाधारण फिल्म बनाई है जिसमें दिखाया गया है कि मैं किस शिद्दत के साथ ब्रूली से प्यार करती हूँ। Bruce Lee, Enter the Dragon. So basically, I think a group of Bruce Lee fans are which made this film possible, which includes even Pooja Valekar. So after this, I just want to play one making video called India Meets China. Yeah. His love for Bruce Lee finally got him to make a film which is a tribute to Bruce Lee, and what better than to collaborate with the Chinese and make a Indo-China film. मैं पैन इंडिया तो बताते हैं, वो पैन इंडिया तो मतलब ग्रेट वॉल के पार भी चला गया है। पैन इंडिया एंड पैन चाइना फिल्म. What prompted you to make something like this? Yeah. I mean, I think it's going to be very difficult for anyone to maybe really understand, because normally any filmmaker will always have a tendency to get influenced by other filmmakers most of the time, because starting from the classics of the 50s to the 70s to whatever. But I've always been influenced by actually Bruce Lee. Because I feel there was also a filmmaker in Bruce Lee apart from him being a martial artist, which is what, in fact, the people have seen my first film, Shiva. Actually, it was a straight copy of a Bruce Lee film called Return of the Dragon. So what I did was, that film, in a nutshell, is Bruce Lee comes from somewhere to Rome, from Hong Kong somewhere, and
some goons are teasing this girl, and he fights them. And then at a point of time, because the troublemaker, they ask him to go out, and he forms his own team, and then there's a fight in the end on the Colosseum. So I just removed the restaurant and put a college and made the exact same film, which most people do not know this, So the change of the, setting, but though Nagarjuna is not a martial artist, I actually adopted the technique of shooting action largely from what I studied and understood from Bruce Lee. Then apart from that, Bruce Lee also was a philosopher. He had strong opinions about things and about life, and which is what influenced me a lot. Many of you will remember when Enter the Dragon released, there were probably hundreds of martial arts schools and thousands opened all over the world because Bruce Lee made it seem so easy to do that. But once I started practicing, I realized it's much easier job to become a film director, so let's leave the martial arts alone. तो वो कहते हैं ना कि all fight and no love makes पूजा a dull girl, और लड़की an incomplete film for that matter. So let's have a song. हिंदी फिल्म में प्यार भी होना चाहिए, तो song called प्यार, please. Thank you. क्या है? उसी बालिका को मैं अब स्टेज पे बुलाना चाहता हूं. पहली फिल्म है उनकी, हौसला अफजाई कीजिए. महको तो ऐसे महको कि बहारों में होश आए, ताली बजाओ तो ऐसे बजाओ कि डेब्यूटेंट को जोश आ जाए. Damn, the AC is really cranked up. So, how are the butterflies? They're coming out of my tummy now. It's everywhere. So, how? He just described how your journey as to how you met him. Yeah. How glad are you that a martial artist is playing a martial artist? First of all, I want to thank everyone for being here today. It's a very special day for us. We have been working on this film past a very long time, and finally we are releasing our film. And me and RGV sir and the makers of the film, we are really, really proud to present you The Ladki. And I hope that you guys love the film. And so to answer your question, more than glad, I would love to say that I feel really blessed and really, really grateful to be here and to be a part of Ladki. It was sir's dream project. I thought that I'm the biggest fan of Ladki until I met sir. And we can talk about Bruce Lee for hours and discuss about his thoughts and way of life. And we have tried to get that essence of Bruce Lee in the film. So let's see. See, that's been a childhood dream for him. Yeah. And he chose you to manifest that on screen. How big a responsibility was that? It was a really, really, really big responsibility for me to perform this role because whatever you're seeing on the screen, so the Pooja Karnik is actually playing RGV sir. So like how Pooja Karnik is a fangirl of Bruce Lee, in real life sir is like that, I guess. He is the biggest fan of Bruce Lee I've ever seen in my life. And we are just trying to portray what sir feels about Bruce Lee. जब वहाँ की बात कीजिए, मैं आपको अगला सवाल पूछता हूँ. ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है. आपने इतने सारे नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जीते टाइक्वांडो में,
उसके बाद आपने और बहुत सारे मार्शल आर्ट सीखे बिफोर बिकमिंग एन एक्टर. हाउ लॉन्ग वॉज योर प्रिपरेशन एंड हाउ लॉन्ग हैज बीन? यू कैन लुक देयर एंड I feel that my preparation for this role wasn't just about, preparing for 2 years, 3 years. I think the journey started the moment I started learning martial arts, and my entire life has been a preparation. That's what I feel. So, and I hope I've performed at least 10% what Bruce Lee can do. Then I'm really happy if people love it. तो चलिए हम अब आपको एक और सीक्वेंस दिखाते हैं फिल्म से. पूजा, हम 2 मिनट के लिए नीचे चले जाते Thank हैं you. और फिर विल बी बैक. Thank you. विल बी बैक फॉर अ Q&A. पूजा, आप रोड ऐसे ही क्रॉस करती हैं गाड़ी के ऊपर से? Not with the given traffic scenario right now. Okay, can we have the mics to the journalists, please?